Hello, today we will do class 9th Maths NCRT chapter 2 Polynomials. Topics are division algorithm, remainder theorem and factor theorem. Okay, so let us start with first division algorithm. So division algorithm is also called division algorithm is also called long division method. It is also called long division method. Long division method. It is also called long division method. Okay. सो क्लास 8th में भी हम लोग ने इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है वो डिस्कस किया था और किया था. सो डिवीजन एल्गोरिदम मीन्स things which we do step by step is called a algorithm, and the division do step by step. So division algorithm is also called long division. We'll take an example. I took the example. So 17 divided by 6. Okay, 17 divided by 6. Okay, so by long division method, when 6 divides 17, so 6 2 ja 12, 6 2 ja 12, 12, remainder is 5. Remainder is 5. So what is division algorithm? Division algorithm is said dividend is equal to divisor into quotient, divisor into quotient plus remainder plus remainder. Okay, so what is quotient, what is dividend, what is remainder, and what is divisor? So this 17 is called dividend, this 17 is called dividend, this is called divisor, this is called divisor, this is called remainder, this is called remainder, and this is called, sorry, this is called quotient, this is called quotient, and this is called divisor. This is called divisor. Okay, 6 is called divisor, 17 is called dividend, 2 is called quotient, and 5 is called remainder. Okay, so dividend is 17, divisor is 6, quotient is 2, and remainder is 5. Okay, so it is verified that 17, let's see, 6 to 12, 12 or 5 is 17. So it is divided, dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. This is called डिवीजन एल्गोरिथम. सो हमने ऑब्जर्व यहाँ पर क्या किया कि जो रिमाइंडर है दिस रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर. सो रिमाइंडर कंडीशन क्या होती है, जो रिमाइंडर होता है वो लेस होता है किससे, डिवाइजर से. रिमाइंडर डिवाइजर से हमेशा हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन 0 के बराबर और 0 से बड़ा होता है. अगर मैंने यहाँ पे डिवाइड किया 6 से 12 को, तो 6 टू जा 12, रिमाइंडर कितना आया, 0. रिमाइंडर कितना आया, 0. सो 0 से या तो बराबर होगा, 0 के या तो बराबर होगा, इसका मतलब 6 12 का फैक्टर है. अगर फैक्टर होगा तो 0 के बराबर, रिमाइंडर क्या होगा, 0 के बराबर होगा, और नहीं तो 0 से बड़ा होगा रिमाइंडर. लेकिन डिवाइजर से क्या होगा, वो हमेशा छोटा होगा. अगर छोटा नहीं होगा, अगर छोटा नहीं होगा, यहाँ कोई नंबर दिया हुआ है, अगर कोई बी नंबर दिया हुआ है, और लेट अगर 18 है, 18 को मैंने दो बार में ले गई, यहाँ अगर 6 आया तो क्या 6 1 बार में नहीं चला जाएगा, 6 1 बार में चला जाएगा ना. सो क्या करते हैं, 6 टू 12. सो अगर यहाँ पे 6 होता, 6 1 6 चला जाता वो. अगर यहाँ पर 6 होता, 5 की जगह यहाँ पे 6 आता, तो 6 1 6, रिमाइंडर 0 हो जाता. तो रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन डिवाइजर बट ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0. Okay, I hope so you have no problem with this division algorithm. अब हम लोग, लेकिन हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, that is our polynomial. So if here it is a polynomial, so polynomial division algorithm in polynomial form, division algorithm is in polynomial form. So let px be
any polynomial any polynomial okay, px be any polynomial and gx is also a polynomial divides px अगर gx px को क्या करता है, डिवाइड करता है. ओके, सो वी गेट quotient qx and remainder rx एंड रिमाइंडर आर एक्स. अगर पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, जी एक्स पी एक्स को डिवाइड करता है, जी एक्स पी एक्स को अगर डिवाइड करता है तो मुझे कुछ ना कुछ क्वोशंट मिलेगा, नहीं तो रिमाइंडर मिलेगा. ओके, सो लेट टेक अ एग्जांपल. द एग्जांपल इज पी एक्स इज इक्वल टू 3x square plus 2x plus 1 and gx is equal to is a linear polynomial that is your x plus 2. अगर x plus 2 इसको डिवाइड करता है, लेट इट इज x minus 2. ओके, इजी हो जाएगा ये. x minus 2 इसको डिवाइड करता है, सो लेट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, बाय दिस क्राइटेरिया देयर इज अ लॉन्ग डिवीजन मेथड. ओके, so gx मैंने यहाँ लिख दिया gx minus 2, this is 3x square plus 2x plus 1. ओके ओके, चलिए डिवाइड करना हम लोग सीखते हैं. हाउ वी विल डिवाइड a polynomial divides another polynomial. ओके, सो क्या करते हैं, जो ये वाला नंबर है इससे इसको डिवाइड करते हैं. सो दिस इज 3x square अपॉन x कैंसिल आउट, इट मीन्स क्या आया, 3x आया. तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, 3x से. ओके, 3x we will multiply by 3x in this whole one. So 3x इसको किया तो this is 3x square और ये minus 6x. ओके, 3x square minus 6. अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या आया, माइनस आया. यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आया, प्लस आया. ओके, सो 8x, 6 का साइन क्या है, प्लस है, 6 का साइन प्लस और 2 का साइन भी प्लस, तो 6 plus 2 8x plus 1. ओके, सो नेक्स्ट यहां पर क्या है, 8x है तो आप यहां पे फिर चेक करोगे, 8x डिवाइड बाय x, फर्स्ट टर्म से ओनली करते हैं, फर्स्ट टर्म से. सो x कैंसिल आउट, दिस बिकम्स 8 हुआ. सो 8 से अब इसको प्लस 8 है तो आप प्लस 8 यहां पे कर दोगे. ओके, सो 8x जा 8x, 8 2 जा 16, सो माइनस 16, प्लस है तो यहाँ आया माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ आया प्लस. ओके, सो दिस इज 17. ओके, दिस इज 17. ओके, इज इट, ओके, इट इज 17. सो व्हाट वी गेट, सो वी गेट qx is equal to 3x plus 8 and rx is equal to 17. rx is equal to 17. ओके, अब चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि आवर आंसर इज करेक्ट और नॉट. सो डिविडेंड क्या था, होता डिवीजन एल्गोरिथम. हियर इज अ डिवीजन एल्गोरिथम. डिविडेंड इज इक्वल टू, तो डिविडेंड मेरा कितना है, px. डिविडेंड कितना है, px. सो आई विल राइट हियर, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड. So px, dividend is equal to px is equal to, divisor is gx, quotient is qx and remainder is rx. Okay, okay, remainder is rx. Okay, remainder is rx. So px is what, the px, this one. So this is px is 6x square 3x square plus 2x plus 1. अब now verify, let's verify. gx is x minus 2 and qx is 3x plus 8 plus rx is 17. So let's divide करते हैं इसको, डिवाइड करते हैं इस पार्ट को
इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, यहाँ स्पेस नहीं इसलिए मैं यहाँ नहीं करूंगी, इसको यहाँ करती हूँ. सो एक्स से इस पूरे में मल्टीप्लाई करें, एक्स मल्टीप्लाई एक्स इन दिस होल वन, so this is 3x square minus 6x plus 8x minus 16. Okay, this is it. Okay, फिर minus 2, so minus 2, 3 2 जा 6 minus 6x 8x minus 16 plus 17. Okay, so this is 3x square. Okay, 3x square. Now 6x or 6x 6x 12x 12 or wait 12x or 8x and 8x 16x. Next minus 16 minus 16. How could go in there? 8 to just 16. 3x square minus 6x 8x minus 16. How this will come? So I hope so this will be the wrong one. Okay, again x from the whole one, so 3x square minus 6 minus 6x x the whole one, 3x to 3x square minus 6x. Okay, so 8 the whole one, 8x minus 16. Okay, so minus 16 and this is plus 17, plus 17. Okay, plus 17. So again come to this point, so 3x square plus 2x plus 1. Let's see this one and this one is the same one. This one and this one is a same one. So verify that px is equal to, it means dividend of a polynomial is equal to divisor of the polynomial into quotient of the polynomial plus remainder of the polynomial. Okay, these types of a question comes in a 2 marks or a 4 marks. If in examination for 4 marks comes px and gx has given, find qx and rx of the given polynomial and verify the division algorithm. Okay, एग्जाम में आता है कि px गिवन होगा एंड gx गिवन होगा, आपको qx एंड rx जो है वो फाइंड करना होगा, देन इसको वेरीफाई करना होगा, डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना होगा कि डिविडेंस इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. ओके, so let's come. I will not rough this portion, I will rough this portion because we need to discuss what is remainder theorem. Okay, so let's discuss remainder theorem which help to for by helping division algorithm, by helping division algorithm. Okay, so remainder theorem, so remainder theorem क्या कहता है? remainder theorem remainder theorem remainder theorem क्या कहता है कि if let px be any polynomial, let px be any polynomials, let p be any polynomial of degree greater than or equal to greater than or equal to 1. पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होनी चाहिए? हमेशा उसकी डिग्री वन होनी चाहिए या वन से बड़ी होनी चाहिए. डिग्री 1 and a be any real number, a be any real number, a be any real number if px
is divided by if px is divided by a linear polynomial x minus a, then remainder is pa. Then remainder is pa. Remainder is pa. Remainder क्या होगा उसका? pa होगा. Let's discuss what the remainder statement said. Let px be any polynomial. Px any polynomial whose degree is 1 or greater than 1. डिग्री हमेशा उसकी जो होगी 1 होगी, यानी ग्रेटेस्ट पावर मस्ट बी 1 or greater than 1. Okay, and a be any real number. A कोई real number है if pa divides by a linear polynomial x minus a. Let's see here. Let's see the example. Then it is a px and this one is a x minus a form. This is x minus a form. A is 2 और x minus a इस पूरे polynomial को divide कर रहा है. So same state things come to here. What the remainder theorem has said that px be any polynomial whose degree is greater than or equal to 1 and a be any real number. A is nothing, is a real number. It may be root 2, it may be minus 1, it may be minus 3, it may be 4, it may be 5, it may be 6, whatever it comes from real number. Okay, real number. If px divide by a linear polynomial, अगर कोई linear polynomial x minus a है, अब यहाँ पे a कुछ भी हो सकता है, -1 होगा तो x plus 1 हो जाएगा, 1 होगा तो x minus 1 होगा. सो x minus a अगर इस px को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा? pa आएगा. द रिमाइंडर विल बी pa. रिमाइंडर विल बी pa. Let px be any polynomial of degree greater than and or equal to 1. अगर greater than है और equal to है 1 के, और a कोई real number है, a कोई real number है, if px is divided by linear polynomial x minus a. अगर px है कोई और वो लीनियर पॉलिनोमियल जो px डिवाइड होता है किससे? एक लीनियर पॉलिनोमियल से, x माइनस a से. a should be real number, then remainder will be pa. Let's discuss. It means a की वैल्यू जो यहाँ पर होगी वही हम पुट कर देंगे पूरे पॉलिनोमियल में. a की वैल्यू हम मेरी कुछ भी हो, जो भी आएगी, जो भी गिवन होगी, उससे हम क्या करेंगे? इस x की जगह पुट कर देंगे और मेरा रिमाइंडर आएगा. यहाँ रिमाइंडर कितना आया था? सेम एग्जांपल आई विल टेक फ्रॉम द ईयर 17 आया. अब इतना लंबा करने की जरूरत क्या है मुझे? अगर एग्जाम में पूछ लिया फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इफ इट डिवाइड्स बाय gx, px is given and gx is given, find the remainder. So if I have a remainder theorem and there is a no condition by division algorithm or anyone else, so why should you, by using division algorithm, long division method, we should use remainder theorem. So let's check remainder theorem. Let's verify it. So here is from the example. Here from example is x minus a is what is given? x minus 2. x minus 2 यहाँ पे दिया हुआ है, x minus 2 यहाँ पे दिया है. इट मीन्स वैल्यू ऑफ a इज, a की वैल्यू कितनी है? 2 है. a की वैल्यू कितनी है? 2 है. सेम में सेम थिंग, x a की वैल्यू कितनी है? 2. ओके, सो लेट्स डिस्कस डू px कितना दिया है यहाँ पे? px इज 3x square 3 plus 2x plus 1 गिवन है. अब px की जगह क्या रखना है मुझे? 2 रखना है. a की जगह क्या रखना है? 2. x की वैल्यू कितनी दी है? pa मुझे निकालना है. दिस इज मुझे pa. a की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो a की वैल्यू 2 रखेंगे हम. सो दिस इज 2 का स्क्वायर प्लस 2 into 2 plus 1. Okay, so this is p2 is equal to 2 2s are 4, 4 3s are 12 plus 4 plus 1, 16 plus 1 is equal to 17. So p2 is equal to 17. p2 is equal to 17.
P2 इज इक्वल टू 17। सो इतना लंबा करने की जरूरत क्या थी मुझे जब यहाँ से। सो अगर गिवन में ना दिया हो कि बाय विच मेथड वी नीड टू फाइंड रिमाइंडर, सो वी हैव टू फाइंड रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम। सो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि if अगर px इज एनी पॉलिनोमियल और उसे कोई दूसरा लीनियर पॉलिनोमियल x बाई x माइनस a के फॉर्म में अगर डिवाइड करता है तो उस a की वैल्यू जब हम पुट कर देते हैं तो पूरा पॉलिनोमियल का रिमाइंडर मुझे मिल जाएगा। Okay, I hope so you have no problem with the remainder theorem, what the remainder theorem has said. It comes on 1 marks if x minus x plus 2 divides the given polynomial, find the remainder by remainder theorem. 1 marks, these types of a question comes in a 1 marks. Okay, so let's discuss about factor theorem. So I will rub this division algorithm and do the factor theorem. Factor theorem. So what the factor theorem has said. Factor theorem. Factor theorem. Okay. So factor theorem has said that let px be any polynomial. Let px be any polynomial. Let px be any polynomial of degree greater than or equal to 1, same from remainder theorem, greater than or equal to 1 and let a be any real number, any real number if px is divided by linear polynomial divided by linear polynomial x minus a, then the remainder is pa is equal to, then remainder pa is equal to 0. Okay, pa is equal to 0. So let's compare the factor theorem and remainder theorem. Okay, so same statement from the let px be any polynomial degree greater than or equal to 1 and let a be any real number polynomial x minus a divides, but then the remainder is pa. यहाँ remainder क्या आएगा, pa आएगा और यहाँ remainder 0 आएगा. यहाँ पर remainder obviously है कि मैं what is the 12 का factor कौन कौन से होंगे, 12 के factor कौन कौन से होंगे, 12 के factor होंगे 2 3 4 6, sorry not multiplication, 2 4 6 12 3 also and 12. Okay, these are the factor of 12. It means 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0. 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा. 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा. 6 से 12 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा. 12 से 12 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 होगा. यानी फैक्टर होने के का कंडीशन क्या होता है, अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ एनी नंबर if it means when we divide by the number smaller number to the greater, if there is a factor then remainder will be 0. Remainder is always 0 if a number is a factor of another number. So same here, factor theorems come from the remainder theorem. Factor theorem said that when a polynomial is a, if the linear polynomial is a factor of the given polynomial, then remainder will be 0. If the divisor, it means x minus a. So x minus a is a linear polynomial. If the linear polynomial divides given polynomial and it is a factor, x minus a is a factor of that given polynomial, then the remainder will be 0. Okay,
तो सेम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे. हियर इज अ pa है ना, इट इज अ 2. यहाँ हम pa a की जगह पुट कर, x की जगह वैल्यू पुट करेंगे, और अगर रिमाइंडर 0 होता है, इसका मतलब लीनियर पॉलिनोमियल यानी 2 जो है इसका क्या होगा, फैक्टर होगा. ओके, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल. सो आई टुक द एग्जांपल ऑफ, so let px is equal to, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग. एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, 3x प्लस 1. So here is a minus also, here is minus, I would take minus also. Okay, so let, and px, this is a px, so px is equal to x square minus 3x minus 2, and gx is equal to x minus 2, x minus 2, gx मेरा कितना आया, x minus 2 आया. ओके, px is x square minus 3x minus 2 and gx is x minus 2. अगर gx मेरा x minus 2 है और px x square minus 3x minus 2 है. ओके, सो मुझे पता करना है कि ये जो gx है वो px को टोटली डिवाइड करता है या नहीं, या चेक gx is a factor of px or not. So let us do this. Okay, so here value of a is 2. Here value of a is 2 because x minus a is 2. So put the value of a given polynomial. Put the value in given polynomial. Px is equal to x square minus 3x minus 2. So px is equal to a की value is 2. Okay, so this is x square is 2 का square minus 3 into 2 minus 2, it means 2 2s are 4, 6 minus 2, sorry, here is a 1 plus 1 plus plus plus. Okay, it is okay. So 6 minus 6 is equal to 0, so p2 is equal to 0. It means a की value 2 रखने पर the given polynomial becomes 0. So x minus 2 is, it means gx is factor of px. Factor of px. Gx is factor of px. I hope so you have a no problem with the division algorithm, remainder theorem and factor theorem. Okay, in the next video we will do exercise 2.3. Okay, so please any query, comment on my box, and please let's share and subscribe. Thank you.